रिकॉर्डिंग क्यों नहीं स्टार्ट हो? A very good afternoon to one and all present. I, Dr. Tanushree, welcome all to the session of Engineers Day. IIC Amity College of Law is organizing this event to celebrate Engineers Day. And today we have our guest speaker, Mr. Kamlesh Ahirwar sir, who is a career counselor, database and Oracle trainer, IT expert, assistant professor at IMT College of Science and Technology. The IIC cell of IMT College of Law has always strived to innovate a spirit of entrepreneurship and innovation among its students. Engineer Day is celebrated across country on 15th of September. This day, also popularly known as Civil Engineer of India, we celebrate actually the birth of Dr. Mokshagdam Vishvesvaraya, popularly known as Civil Engineer of India. And this day, particular day, was announced by Government of India in the year 1868 to celebrate 15 September as Engineers Day every year. Career in engineering is the dream of maximum number of students pursuing their intermediate studies with science subjects like maths, physics, and chemistry. And there are many of them who want to become a civil engineer. So today we are marking this day, and I especially welcome our guest for today. So thank you so much, sir, for joining this event. And now over to you. Thank you for giving this opportunity, ma'am. Thank you, ma'am. My slide is visible, ma'am? Yes, sir. Yeah. Thank you, ma'am. Firstly, I pay my respect to Sir M. Vishvesvaraya, the father of Indian engineering. Engineers. Who is engineers and what is the work of engineers? An engineer is a person who uses scientific knowledge to design, construct and maintain engines, design softwares, applications and machines structure such as roads, railways, bridges and paraphernalia. Engineers are creative people who use their imaginations and knowledge of math and science to improve human lives. Engineering has evolved and developed as practical art and profession over more than 15 centuries. Historical studies of engineering teach us respect for the past and its achievement. The introduction of engineering, the concept of engineering has excited since ancient times as humans devised fundamental inventions such as the pulley, lever, and wheel. Each of these inventions is consistent with the modern definition of engineering, exploiting basic mechanical principles to develop useful tools and projects. Engineering approach. What is engineering approach? Engineers are creative people who use their imagination and knowledge of maths and science to improve human lives. यानी ह्यूमन लाइफ को आसान बनाने के लिए इंजीनियर्स ने कुछ इन्वेंशन किए हैं अपने नॉलेज, अपने इमेजिनेशन के बेस पर। कैसे हमारी ह्यूमन लाइफ बेस्ट होगी, कैसे हमारी पास्ट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन बेस्ट होगी। Firstly, the engineers identify a problem or need. It may be a problem with an existing product or a wish for a new product. Identify design constraints, requirements that limits how engineers designed the products, functions, money, time, materials, etc.
After that, gather the information necessary to design and build the product. Research, even if someone else has already worked on the problem, and engineer can learn from the mistakes of others or improve on the solution already developed. After that, develop several possible designs. Using the research, engineers generates as many ideas as possible for the solution to the design problem. Analyze the solution to determine which will work. Evaluate best ideas to see which will be functional, safe, cost effective, and valuable to customer. Choose the best solution based on your analysis. Engineers must consider all data gathered and they use the data to choose the final design. How will the product look? Build a prototype of the selected design. Prototype a model of the chosen design. If the prototype works, testing the product will continue. Test is an important part after the completion of prototype, after completion of model. Test the prototype and evaluate its design. Engineers work out any problems in the design before it is produced and sold. Repeat any or all steps as needed. Refine prototype, redevelop if necessary, makes sure final product is as good as it can be. यानी अगर कुछ भी इसमें हमारे साथ अगर कुछ लग रहा है इसमें कुछ रिपीट होना है तो आफ्टर टेस्टिंग इंजीनियर्स इसको रिपीट करते हैं. कैसे करते हैं? हमारी इंडस्ट्री, हमारे पूरे सोसाइटी को, ह्यूमन सोसाइटी को, इवन वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, इंडिया, इवन पूरे वर्ल्ड में कैसे इंफॉर्मेशन ने, कैसे इंजीनियर्स ने हमारी सोसाइटी को चेंज किया है. अगर स्पेशली बात करें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स यानी इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट की बात करें तो उसके कंटेक्स्ट से पहले हमें एंशिएंट एज में जाना पड़ेगा. सबसे पहले हमारा जो था, क्योंकि आज का टाइम जो है पूरा इंफॉर्मेशन बेस है, जिसके पास इंफॉर्मेशन है वो पावरफुल है. यानी सबसे पहले जो हमारी सोसाइटी थी वो कैसी सोसाइटी थी? स्टोन एज सोसाइटी थी. स्टोन एज के बाद एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी यानी एग्रीकल्चर और थोड़ा एडवांस हुआ. एग्रीकल्चर सोसाइटी के बाद हमारी सोसाइटी इंडस्ट्रियल सोसाइटी में कन्वर्ट हुई. इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बाद हमारी सोसाइटी इंफॉर्मेशन सोसाइटी में कन्वर्ट हो गई. यानी जिसके पास इंफॉर्मेशन है वो आज का पावरफुल है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, पर्टिकुलर व्यक्ति हो, जिसके पास इंफॉर्मेशन है वो आज के टाइम में सबसे ज्यादा पावरफुल है. इंफॉर्मेशन के बाद आया इंफॉर्मेशन नॉलेज बेस्ड सोसाइटी, यानी जिसके पास नॉलेज है उसके पास मैन पावर है और वो इस पूरे वर्ल्ड को, इस पूरी दुनिया को वही रन कर रहा है. इवन चाहे फेसबुक हो, चाहे हमारी इंडियन कंपनी हो, चाहे गूगल हो, जिसके पास आप देख रहे होंगे जिसके पास भी नॉलेज है वो इस वर्ल्ड को लीड कर रहा है. Development and contribution of engineering in society. What is the contribution in the society? The Accreditation Board of Engineering and Technology defines engineering as the profession in which a knowledge of the mathematical and natural science gained by study, experience, and practice is applied with judgment to develop ways to utilize economically the materials and forces of nature for the benefit of mankind. Engineering in early years, inventions and innovations. ऐसा नहीं है कि आज के टाइम में इंजीनियर्स हैं, हम हजारों साल पहले से इंजीनियरिंग के कंसेप्ट को हम जी रहे हैं. हमारे पहले वाले जो जनरेशन थी उन्होंने भी कुछ ऐसा कंसेप्ट दिए, ऐसे काम किए जिनको आज के हमारा मॉडर्न इंजीनियर उसको अपना एक मॉडल मानता है. इसके बहुत सारे एग्जाम्पल, मोहनजोदारो, रोमन ग्रीक सिविलाइजेशन, आप देख सकते हैं बहुत सारे पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में ऐसे हमारे साथ इंजीनियरिंग के नमूने मिल जाएंगे. Inventions and innovations had existed in early years consist of Mesopotamia, Egyptian, Greek, Roman civilization, Mohenjo-daro, etc. Contribution of the Mesopotamians, wheeled cart first appeared the land of Tigris and Euphrates River. Canals, temples, and city walls
Sumerian peoples. Also the astrolabe, an angle measuring device, was being used for astronomical observation. The ziggurat, traced pyramid of brick. Code of Hammurabi, important message dealing with quality assurance and professional responsibility. Irrigation and flood control works, canals, public water supply. Also the example of engineering. Contribution of the Egyptian beginning at 20 BC, surveying using rope irrigation system, dikes, canals, and drainage system. The Pharos of Alexandria, first lighthouse tunnel, 3300 long foot tunnel. हमें अपने आप में ये बहुत बड़ी इंजीनियरिंग का इन्वेंशन है. Contribution of the Roman beginning at 450 BC, hydraulic cement construction machine, pillars, drivers, treadmill, hoist, wooden buckets, wheels, etc. From 500 BC to 1200 AD, Gothic cathedral, the lightest, most daring skeleton stone construction, labor-saving devices जैसे bind mill, water mills, water wheels, China gunpowder, and development of making paper process, iron, stone, bricks, uses in and Buddha vihars, temples in India or all over the world. Contribution of the Islamic civilization, measurement of distance and size of planet, time and calendar determination, algebra and trigonometry. Advancement of science from 1300 to 1750 AD, advancement in transportation and communicational building, invention of canal lock introduced by Italian architect engineer, networks of canal constructed throughout Europe, ocean transport, navigation and shipbuilding, docks and harbors. Johann Gutenberg's movable type fold for printing was invented in 1450. Advancement in engineering from 1715 to 1900 AD, James Watt produced a working model of a vastly improved steam engine. Advance in technology of road building, development of electricity, source of power, communication by telegraph. Engineering profession, John Smeaton of Great Britain, the first used title civil engineer, 1880. Institution of Civil Engineers, 1847. Institution of Mechanical Engineer, 1908. Engineering societies in America was established for civil, electrical, chemical, and mining engineering. Engineering in 20th century, air transportation in 1903. Motor vehicles, treatment of water and sewage, even nuclear power. Contribution of engineers, especially in India, engineers have completely changed the world we live in, from modern homes, bridges, space travel, cars, and the latest mobile technology, software technology, artificial intelligence, data science, and many more work and areas. Innovative ideas are at the heart of what engineers do, and they use their knowledge to create new and exciting prospects and solve any problem that may arise. Agriculture sector, banking sector, marketing, educational, automobile sector, space, weather, disaster management, industry. इन सेक्टर में हम इंजीनियरिंग का बेस्ट यूज हम देख सकते हैं अपने इन द रियल वर्ल्ड, और इन प्रेजेंट टाइम में हम देख पा रहे हैं कि इंजीनियरिंग ने कितना एवोल्यूशन किया है, कितना क्रांति किया है हमारे जीवन में. एग्रीकल्चर सेक्टर में आज लोग ट्रैक्टरों से खेती करते हैं, स्प्रिंकलर सिंचाई, ये सब इंजीनियरिंग का एक हमारे पास मॉडल है. उन्नत तकनीक जिसका हम यूज कर रहे हैं, हमारा ये सक्सेस, इंडिया की सक्सेस इकोनॉमी में एक पार्ट है, पार्ट हमारा एग्रीकल्चर का. तो एग्रीकल्चर कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारी इंडियन इकोनॉमी को? विदाउट
इंजीनियरिंग, विदाउट इंजीनियरिंग इन्वेंशन ये पॉसिबल नहीं था कि इकोनॉमी में हमारा कंट्रीब्यूशन इतना ज्यादा रहेगा। इसका एग्रीकल्चर का और इवन सभी सेक्टर का, बैंकिंग, मार्केटिंग, एजुकेशनल, ऑटोमोबाइल, स्पेस, वेदर, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंडस्ट्री, सभी में इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा रोल है। इसके बिना इसका पॉसिबल नहीं है। There are many branches of engineering like civil engineering, computer science engineering, electronics and electrical, artificial intelligence, electrical engineering, mechanical engineering, chemical engineering, aeronautical engineering, data science engineering, genetic engineering or mechatronics engineering. कुछ कोड्स होते हैं, कुछ लॉस होते हैं, कुछ एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स होते हैं, कोड ऑफ मॉरलिटी होती है जो इंजीनियर्स को अपने लाइफ में फॉलो करना पड़ता है, उसके साथ ही इन्वेंशन को, क्योंकि इन्वेंशन के साथ साथ हमें ह्यूमन वैल्यू, मोरल वैल्यू और एथिकल वैल्यू का भी ध्यान रखना होता है इंजीनियर्स को। एथिक्स, परसेप्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन। एथिक्स इज द स्टडी ऑफ द मोरलिटी ऑफ ह्यूमन एक्शन. It is the science of determining values in human conduct and of deciding what ought to be done in different circumstances and situations. Major areas of study in ethics include meta-ethics, about the theoretical meaning and references of moral propositions and how their truth values may be determined. Normative ethics, about the practical means of determining a moral courses of action. Applied ethics, about how moral outcomes can be achieved in specific situations. Example, engineering ethics. Engineers rarely work as lone individuals, therefore we need a set of interaction rules outlining the expected sets of behavior between the engineer, other individuals and society as a whole. Interaction rules can be classified as etiquette, law, morals, and ethics. Etiquette rules of acceptable personal behavior and courtesy when interacting with others in a social setting. Addresses such issues as how many folks to place on the dinner table, proper dress at bedding, sitting arrangement, and invitations to parties. हम आज के टाइम में बोल देते हैं एकदम से कि देखिए इंजीनियर की एक अलग पहचान होती है, सूट बूट कोट टाई में दिख जाएगा आपको इंजीनियर, इस टाइप से एक आइडेंटिफाई है। आज के टाइम में बोलते हैं सब कुछ अपने आप में, यानी सब अपने आप में एक इंजीनियर है, उनकी एक अलग ही पहचान होती है। In engineering, proper etiquette is manifested by showing proper respect to employer and clients, not embracing collegious, answering the phone in a professional manner and so forth. यानी इंजीनियर के पास एक प्रोफेशनल मैनर भी होता है, एक नॉलेज भी होता है, इन्वेंटेड आइडियाज होते हैं, नॉलेज के साथ साथ उसको इम्प्लीमेंट करने की टेक्निक्स भी होती है, उसको टेस्ट करने की टेक्निक होती है। अगर कोई उसमें बाद में कोई कमी है या इन फ्यूचर के रिक्वायरमेंट के बेस पे अगर कुछ उसमें अपडेट करना है तो वो भी उसमें कर सकते हैं। ऐसा मॉडल वो रिप्रेजेंट करता है, ऐसा प्रोटोटाइप इंजीनियर्स के द्वारा मेड किया जाता है। लॉस, अ सिस्टम ऑफ रूल्स एंड पनिशमेंट क्लियरली डिफाइंड एंड स्टेबलाइज्ड बाय अ सोसाइटी टू मेंटेन अ सेफ एंड ऑर्डरली सोशल एनवायरनमेंट. Violation of law carry penalties such as imprisonment, fines, community service, death, dismemberment, or banishment. Each society has its own consequences for law violation. Morals, personal rules of right and wrong behavior derived from a person's upbringing, religious beliefs, and societal influences. Morals are derived from our parents, societies, religious background, friends, and the media. Ethics, a code or system of rules defining moral behavior for a particular society. Most professional societies have a formal code of ethics to guide their members. इसके साथ एक इंजीनियर्स का हमारे जीवन में, चाहे वो इंडिया की बात करें, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें, एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इन्वेंशन की फील्ड हो या सोसाइटल फील्ड हो,
उसका एथिकल बिहेवियर हो, उसका मोरल बिहेवियर हो, सब एक पर्टिकुलर मैनर और पर्टिकुलर वे में एक इंजीनियर्स का होता है। ये उसका कंट्रीब्यूशन है पूरी सोसाइटी के लिए, और पूरे सोसाइटी में इकोनॉमी का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूशन है। ऑल ओवर द वर्ल्ड में इंजीनियर्स का जो भी टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं आज के टाइम में, अगर मैं ये लेक्चर आप तक डिलीवर कर रहा हूँ तो ये भी विद द हेल्प ऑफ इंजीनियरिंग के हेल्प से हम ये डिलीवर्ड आप तक कर पा रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir, for this wonderful lecture. And my heartiest gratitude to you for joining this session and enriching our students with your knowledge and expertise. Today, Thank you, ma'am. this Thank you session, so much again. thank you so much, sir. This session was to celebrate the birth date of Dr. M. Vishweswaraya, who was awarded the Bharat Ratna in the year 1955. So 15th September is celebrated as Engineers Day. Engineers Day was announced by the Government of India in the year 1968, and since that it is celebrated every year. So students, I hope this session was enriching to all of you. And once again, a very heartfelt thank to our esteemed guest who has spared his precious time for us. Thank you so much once again, sir. I also thank all the listeners for their patient listening. And with this, we end this session of today. Thank you so much all. Thank you, ma'am.